पूछ सकते हैं before I go into ML1. Any questions that you have? एग्जाम के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ ले. सर ये फाइनल्स में मिड का कोर्स होगा सर? जी सर हमारे फाइनल्स में ये मिड का कोर्स आएगा सर, इंक्लूड होगा? देखो बात ये है कि आप कौन है? सर हसन। Hassan, railways is railways. We will keep talking of the railways. We will keep talking of infrastructure. We will keep talking of locomotives. We will keep talking of train operations, the safety of train operations. Railway stations की बात हुई तो railways तो वही है, frankly. But देखेंगे कि क्या है. But most of my questions are based on common sense. तो आपको concept समझ आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, railways है क्या. Then of course पाकिस्तान railways पे कोई question होगा तो वो अब मैंने आपको बता दिए. तो उसमें for example अगर let us say there is a question on Pakistan Railways on the financials of Pakistan Railways, so you need to understand कि ये है क्या. मतलब you should know कि जी the most of the chunk is going into pensions, whatever have I explained today. So that is the lecture, that is your exam. ठीक है ना? Railways is still railways. It will remain railways even after 20 years. It will remain railways, and we will be answering the same questions. जो आपने मिड टर्म में भी है वो तो और बड़ी सिंपल किस्म की चीजें थी. बट इट विल बी डोंट एग्जाम के बारे में उस पे दिमाग में ना लाए. थोड़ा सा देख लिया करें. मैंने जो लेक्चर्स हैं ये जो स्लाइड शोज हैं इसको देख के देन ट्राई टू थोड़ा सा गूगल कर लिया करें. अल्लाह ने गूगल दिया हुआ जबरदस्त चीज है. उस दिन द अदर डे डॉक्टर वाज टेलिंग मी, आई हैड गॉन टू हिम, ही सेज खटक साहब प्लीज गूगल कर लें, इसको देख लें. तो मैं कहा जी आप डॉक्टर हैं, मुझे गूगल की बात करें. गूगल तो मैं वैसे भी कर लूंगा, बट हेयर इट इज रेलेवेंट तो देख लें. ठीक है, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ द एग्जाम्स, आते रहेंगे. व्हाट आई सेड अबाउट द मिड टर्म इज जस्ट एन जनरल इंप्रेशन कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर देन व्हाट यू डिड फ्रेंकली, मोस्ट ऑफ यू. सर पेपर्स चेक हो गए हैं? बट कर रहा हूं, मैंने कर लिए, कुछ देख लिए, ओवरऑल देख ली. वही मैं कह रहा हूं ना कि आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट आई सॉ इन द पेपर्स. आई एम श्योर इसका जो इफेक्ट है ना, आई कैन सी इट इज ऑन डिस्टेंस लर्निंग. ये ऑनलाइन लर्निंग फ्रेंकली इट इज गुड इन वन वे, बट ऑन द अदर हैंड देन आप पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बिकॉज वी कांट हैव आई कांटेक्ट, होता नहीं है. एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो सिर्फ बातों में रह जाती है. समटाइम्स यू आर अटेंटिव, समटाइम्स यू आर नॉट अटेंटिव, वो रह जाती है. 100% राइट सर. सर आपसे सर वो आप बात कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स. सर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है हमारे पास सर, जिसमें वो था क्या नाम है पेशावर स्वात का एक मुराद सईद सर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट तो रह चुका है. नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है. यही सारे मसले हैं गवर्नमेंट के. दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. उसका एक्चुअली वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री बनी थी, वो बनी थी ये TNT के लिए. ये जो टेलीफोन्स का महकमा नहीं है, इसके लिए बनी थी सर. क्योंकि उसका नाम कम्युनिकेशन था, इन्होंने मोटरवेज और उसमें ये हाईवेज उसमें डाल दी. सर यही तो मसला है ना सर. पेपर से ना कुछ ही दिन पहले मुराद सईद का चाह रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसके पास. तो नहीं, ही वाज मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस. इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली कहा कि कोई मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स है तो एटलीस्ट. अब मैं सोच रहा था कि आप लोगों को पता होगा कि यार ये है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको एलेबोरेट किया था कि सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में बटा हुआ है. इसीलिए कोई नॉर्मल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी नहीं आ रही, और इसीलिए इसकी जो प्लानिंग है फॉर ट्रांसपोर्ट एज अ होल कि वेयर टू स्पेंड मनी, वेदर टू स्पेंड मनी ऑन रेल और ऑन रोड्स और इन द शिपिंग सेक्टर और इन व्हाटएवर एयरवेज पे करें. तो ये एक ट्रांसपोर्ट कम से कम एक मिनिस्टर होना चाहिए जो कि इसके ऊपर बात करे ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर. दिस इज नाउ माय व्यू. मे बी ही कैन हैव 3 or 4 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अंडर हिम, और वो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे हो, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड्स हो, और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड पोर्ट्स एंड शिपिंग हो जाए
एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एविएशन हो जाए, वो हो सकता है। मिनिस्ट्री एक होनी चाहिए ताकि प्लानिंग ओवरऑल एक बॉडी के नीचे हो रही। अब वो these 4 ministries, 4 or 5, then the provincial governments have their own roads and transport sector उनका अपना है। Now when you look at these 4 ministries taking cases to the planning commission, वहाँ planning commission में भी इतनी capacity नहीं है कि देखे कि क्या होना चाहिए। अब minister में say I want a big port, there should be somebody who says how do you connect it to the hinterland। आपके पास connection तो है नहीं, port बनाई जा रही, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए क्वेश्चन किया। यू आर राइट कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एट वन टाइम व्हेन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रेलवेज वाज वन डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। उस वक्त टेलीफोन TNT ये बहुत बड़ा महकमा होता था, सो दे हैड मोटरवेज वर नॉट देयर, तो ये उसमें कम्युनिकेशंस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वाज वन डिवीजन। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अपनी, तो ये है। सर हम कम्युनिकेशन वैसे ट्रांसपोर्ट में आ नहीं सकता सर कि कम्युनिकेशन में भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड हो। यही मैं कह रहा हूँ ना कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये मोटरवेज एंड हाईवेज का जो महकमा जो कम्युनिकेशन में दिया है, इट शुड बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। एंड स्पेशली व्हेन यू लुक एट द सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उनका ट्रांसपोर्ट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है फ्रैंकली। सर आपसे वो सम DMG ऑफिसर, सम सेक्रेटेरिएट ऑफिसर को जिसकी जगह नहीं है वो उसको वहां लगा देते हैं। सर ये NHA FWO ये सब कुछ सर ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर है। सिर्फ मोटरवेज एंड हाईवेज, मोटरवे पुलिस चूंकि मोटरवे के साथ कनेक्टेड है। FWO जो है वो आर्मी का इदारा है। इट इज फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। It is an organization which is manned by uniformed people of the army. उनका जनरल जो होता है लेफ्टिनेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल, वो सर्विंग आर्मी ऑफिसर होता है। इसी तरह उसके DGs होते हैं, मेजर जनरल्स होते हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, वो काम करते हैं। अब शुड दे बी डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क और नॉट, दैट इज अगेन अ बिग इशू कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि फौज को ये काम करने चाहिए कि नहीं। That needs to be discussed और होना देखना चाहिए। अब most of our projects here in the road sector, even in the railways, FWO and NLC are there. Yes sir, NLC तो हमारे पास बहुत बड़ा एक इदारा है सर जो properly आर्मी के अंडर वर्क करता है। वो आर्मी का इदारा है। Now what NLC is doing, they're into construction business. They're also into transportation business. Yes, should they be doing it or should they not be doing it? उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ओवरऑल मुल्क पे क्या फर्क, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट और बड़ा सीरियस डिबेट है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीजें, अब ये जो विच यू हैव मेंशन्ड NLC is not under any ministry, it is under the Ministry of Defense. It is almost a army organization. तो ये हॉच पॉच ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खत्म होना चाहिए। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर शुड बी वन मिनिस्ट्री व्हिच शुड बी शिपिंग है सर, ये भी तुम्हारी नेवी के अंडर फिर आती होगी। शिपिंग, पोर्ट्स एंड शिपिंग इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री व्हिच मैनेजेस द पोर्ट्स एट कराची। कराची पोर्ट ट्रस्ट को मैनेज करती है, पोर्ट कासिम को मैनेज करती है और गवादर को मैनेज करती है, और फिर उसके साथ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन को मैनेज करती है। सर ये कौन सा बिग मिनिस्ट्री जी? सर ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। अब इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम, नाम चेंज कर दिया अभी। सर ये तो कभी नाम भी नहीं सुना है इसका, पोर्ट्स एंड शिपिंग। नहीं, ये 2 साल पहले यही नाम था इसका, अब उसका नाम हो गया मैरीटाइम। ठीक हो गया सर। हाँ, ये चेंज करते रहते हैं यार, कोई आ जाता है ऐसे ही मार देता है, बात वही है। पोर्ट्स का, शिपिंग का, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर का काम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में होना चाहिए। कोई मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है ही नहीं तो क्या होगा? ये मसले हैं ना सारे, ये जितना मैंने एक्सप्लेन किया यही मसले हैं गवर्नमेंट के। तो ये जब पॉलिसी गलत बन जाती है फिर आगे चल वो इसीलिए रेलवे का भी बेड़ा गर्क है और सबका बेड़ा गर्क है।
सर ये बनाते क्यों नहीं है मिनिस्ट्री? यही तो मसला है। ये इसलिए नहीं बनाते कि देखें आपके पास अभी 4 मिनिस्टर आपको चाहिए। ये गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट है ना, पिछली भी कोalition गवर्नमेंट थी, उनको मिनिस्टर बनाने होते हैं। अब आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक मिनिस्टर अगर ले लोगे, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, और इसके नीचे पोर्ट्स एंड शिपिंग भी आ जाएगा, उसके नीचे रेलवेज भी आ जाएगा, उसके नीचे मोटरवेज भी आ जाएंगे, और उसके नीचे सिविल एविएशन एयरलाइंस भी आ जाएंगे, तो वो तो बहुत पावरफुल मिनिस्टर बन जाएगा। वो तो लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर गवर्नमेंट 4 मिनिस्टर नहीं बना सकेगी, एक मिनिस्टर बनाएगी। ये मसले हैं। अब वो पॉलिटिकल मसले हैं। अब पॉलिटिकल मसलों से वो जो हमारा जो सेक्टर है ना, वो डैमेज हो रहा है। तो ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते रहते हैं कि आप जी यू शुड हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, so that the entire transport sector can be monitored, their working can be reviewed, and allocations can be made, and where the money should go, that the transport ministry should decide. Yeah, agar if you have a strong good minister in the ministry of port and shipping, वो कहेगा जी मेरी ports को ठीक करें, पैसे इधर लगा दें, ये conveyor belts चाहिए, फलाना चाहिए, ships के लिए berths चाहिए, and he'll start spending money out there. But if you have a strong railway minister, then of course he will say, okay, we would like. So that is how these policies are made and unmade and unfortunate. And ML1, that is why ML1 7-8 साल हो गए आ नहीं रहा. Everyone says कि होना चाहिए, but आता इसलिए नहीं because ownership नहीं है कोई किसी की. ठीक हो गया सर. ठीक है. तो मेरा अपना ख्याल है कि आज के लिए आई थिंक वी कॉल इट अ डे, क्योंकि ये जो ML1 में स्टार्ट करूंगा ना, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि let you know what CPEC is basically, and again these are all my views frankly. There are some people you can differ with me. So we are going to talk of China-Pakistan economic corridor. ये क्या बला है आगे? And why is it necessary that we have China-Pakistan economic corridor? Why could we not? Here is an opportunity under China-Pakistan economic corridor CPEC that we can sort of develop our railway infrastructure. And how do you develop the railway infrastructure? We are just saying, okay, you develop one of the main lines from Karachi to Peshawar. Sare railway system don't develop it. That, of course, later on, if we have money, we will do it. But what the railways is saying is that we want to develop one major artery of the railways and bring it to some worthwhile international standards, so that we can sort of facilitate the growth of the economy, we can facilitate movement of goods and people on the in this beautiful Karachi to Peshawar corridor. और ये है. And why then वो देखेंगे why ML1, why not ML2, why not ML3? And ये जो इसका the project's name is Upgradation of ML-1, Project of Pakistan Railways and Establishment of a Dry Port near Havelian. ये क्यों है? आप चले ये तो बता दें. Common sense. मैं for example, I could have said कि नहीं, project should be upgradation of ML1 and creation of a huge railway station at Lahore and Rawalpindi. ये भी हो सकता था. Why are we saying establishment of a dry port near Haveli? सर बिकॉज के हमारे पास हवेलियन से आगे रेलवे लाइन है ही नहीं. ठीक है, तो नहीं है तो क्या फर्क पड़ गया? और सर ये कि हमारे पास वहाँ पे जो हवेलियन में स्पेस होगी, लाहौर में पिंडी में हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंजेशन है. डिफरेंट एरियाज में बहुत ज्यादा कंजेशन है, और यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइव लैंड अवेलेबिलिटी भी है हवेलिया में, कि हमारे पास जो सामान अगर फॉर एग्जांपल गिलगित से आता है, चाइना बॉर्डर से आता है, तो हमारे पास ये एक सेफेस्ट प्लेस होगी कि यहाँ पे हम उसको मतलब कंटेनर की प्लेसमेंट इजीली हो जाएगी, लैंड अवेलेबिलिटी भी है हमारे पास. Now the last part of your answer, the last part of your observation is a valid transport issue. We want the project wants a dry port at Havelian. Why Havelian? Because Havelian is the last railway point on this sector. Yes sir. And while
Luckily, Havelia is on the Karakoram highway, which is connected to China, already connected to China. And the government has spent a lot of money on the Karakoram highway. The Chinese government has also facilitated us on the construction of the Karakoram highway. And we expect that a lot of traffic will be moving from China to Pakistan and from Pakistan to China on the Karakoram highway in the future. To facilitate that kind of traffic, the project says that, okay, we should have a dry port near Havelian, ताकि कराकोरम हाईवे कनेक्ट हो जाए रेल के साथ. समझ गए? इसमें चाइना का इंटरेस्ट है. Why? Because this is a China-Pakistan economic corridor. It is not a Pakistan economic corridor. ये दोनों का कॉरिडोर है. कॉरिडोर किसको कहते हैं? कॉरिडोर कहते हैं रास्ते को, एक इलाके को. अब वो इलाका जब when I go into explaining what CPEC is and how I look at it and how railways will be looking at it, then you will realize कि क्या है. तो China, normally when we talk of CPEC और China Pakistan economic corridor, हम समझते हैं ये पाकिस्तान का काम है. ये पाकिस्तान का काम नहीं है. ये चाइना इसमें बहुत बड़ा पार्टनर है आपका, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है. Besides investing money and giving you technical support for different projects, they are also interested in making use of whatever money these projects are consuming. ये जो पैसे आ रहे हैं, these projects then will further benefit China in one way or the other. One is, of course, they will come here, their companies will come here, like they've constructed your sort of Hazara motorway from Havelia to Takot. They've constructed your Multan to Sakkar highway motorway. They have constructed your Hakla Rawalpindi to Miawali highway. ये उनका कॉरिडोर में है, CPEC में डेवलप हुई. But then why should China invest in say Multan to Sakkar? Of course, their companies are there. They're getting money out of it. Construction companies are here. They're engaged. But in the long run, these motorways and this network of railways, ML-1, if it is upgraded, it will also be beneficial to China in different ways. वो हम देखेंगे कैसे है. So that is why the name is China-Pakistan Economic Corridor. And इसमें ये जो, you should be very conscious of these things. Just look at the name. Economic corridor. It is not a political corridor. It is not a social corridor. It has nothing to do with other social factors. They're not interested in sort of raising your health facilities or your educational facilities or they're just here to sort of give you support in developing the economic corridor. And which economic corridor? Some parts of Pakistan, in fact, the whole of Pakistan, and some parts of China. When we go deep into the project, you will be surprised. Actually, Beijing and Xi'an and Shanghai and all, they have nothing to do with our China-Pakistan economic corridor. They're far away. इसके benefits किसी और जगह पे हैं. वो then once I start this project, तो वो now Havelia, having a dry port at Havelia is relevant to China. Why? Because it is connected to the Karakoram highway. It is the last railway point. And let me tell you that in the future, under CPEC projects, one of the projects is to connect Havelia to Khunjarab, to Kashgar, in fact. But that will come very, very long term. It is not an easy project. It is a difficult project. But when you look at the development of Chinese railways, when you look at how they have developed their railways in mountainous areas, they've even taken their railway lines to Lhasa in Tibet, which is an engineering wonder of the world in itself. So वो बंदा कहता है कि यार it can be easily done. And when you see things being done in the other parts of the world, especially in your neighborhood in China and in India, then you think यार ये होना चाहिए. So that is also part of CPEC, but that will be very long term. And then of course CPEC, the Havelia dry port will have a big importance at that time when the connectivity starts. But initially we expect that at Havelia a lot of materials will be coming in by train.
into Havelian and destined for China. So that is why the Chinese are interested. They'll be using Gwadar port, they'll be using Karachi port, and then these products will go via Karakoram highway into China, into Khunjarab and on to Kashgar and on to Uramchi and all. ये बड़ा short बनता है. So that is the interest. Now, अगर हम इसको कहते हैं जी dry port somewhere else, then of course Chinese would have been a little apprehensive that it doesn't help us out. But there's there's misconception. People think that China-Pakistan economic corridor or the upgradation of ML-1 or especially and the construction of these highways, motorways, this is benefiting China more than us. It's a galat conception. ML-1, frankly, is a project which is badly needed for Pakistan Railways. It is badly needed for the economy of Pakistan. It is needed for facilitating the economic growth of Pakistan at a certain level of 7 to 8% or 9%, Allah kare 10%. China is even under COVID is growing at 7-8%. So this project is a Pakistan project. Luckily, China is there to help us out financially, and luckily they're there to help us out technically. But the project itself is so good that China is more interested, looks more interested than doing it than Pakistan at times, which is again unfortunate. So yeah, Chinese, and they keep, you know, in hidden words, they keep saying it that this is what is required for Pakistan. The other projects can of course come, but this is a big project, frankly. 9.3 billion is a huge amount for any project in the world. Or the government, of course, now is trying to go on the fast track. Luckily or unluckily, they're doing a good job, but देखते हैं कि आगे political situation कैसे होती है. Investing in such a big project, I think China will also be a little apprehensive if it is done quickly and the government can sustain it and then keep on going. So that is what they would like. Of course, in such big projects, the politics also plays a big role. So ठीक है. So next time then I start with ML1, upgradation project of ML1, and we will see कि क्या है, what is this ML1, what is CPEC, and how it will be sort of amalgamated into the bigger picture of Pakistan transport sector, how it will facilitate the the economy of Pakistan, and whether it is financially viable or not. That is a big question. Now, if you spend, China is more than willing to give you the money, but you have to spend it and you have to then return that amount. $9.3 billion has to be returned. Is there a return on this by running your trains in an efficient and a productive manner? That we are going to see. If we mess up again, then we will not be able to repay the loan. We will not be able to repay the interest. We will not be able to repay the commitment fees and all these other fees. Then we are stuck, frankly. वो जो कहते हैं ना कर्ज लेके then you can't repay. But the good thing is that this is a financially viable project, and the Chinese know that this is a financially viable project, and it is run efficiently, if it is run on pure economic and financial terms, it will give you a good return, and the Chinese know this, and the Chinese banks also know this. Besides the Chinese companies also know this, that once the trains start moving, once the traffic start moving, like I gave you the example of Bombay-Delhi corridor, there's a lot of money to be made, and it is then becomes financially viable and economically viable. So thank you very much. This is all for now. Or next on Friday, then we meet. And I would request कि बाकी लोगों को भी कहेंगे why, क्योंकि ML1 को understand करना, frankly, this is a national project and not only a railway systems. You will understand the railway systems, how these projects are made, what is there, उसकी dynamics क्या है, what are the pressures that are there. Since I've been heading the project myself, so you are lucky in that sense कि कुछ we will be able to make some sense out of it. And this project anyway is coming, whether
one government comes or another. It has been delayed, but it will come. So thank you very much. Khuda Hafiz. Excuse me, sir.